अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है एक्सपेंसिव ट्रेन जर्नी इन इंडिया, पैलेस ऑन व्हील एट 1.4 लाख, नहीं 1.2 012.4 लाख 12 लाख होगा यार। जीरो तो वीडियो में देखते हैं। लैक्स 12 लाख टिकट। Good evening, madam. Welcome on board Palace on Wheels. Thank you so much. Thank you. Wow. I have seen such royal trains only in the movies, but this time on WanderLuxe, I am staying at India's first luxury train, which is amongst the top 5 luxury trains in the world, which has hosted the First Lady of India, American ambassadors, Lord King Chairman of the British Embassy, amongst the many other renowned dignitaries. This is the Palace on Wheels, where I will be staying at the super deluxe cabin costing 12.4 lakh rupees all inclusive for a 7 nights splendid journey across Rajasthan. Let's get So WanderLuxe is all about being OTT, just like my outfit.
absolutely unmatched. Now, these are some of the luxuries you can enjoy while traveling on a luxury train versus traveling on an outstation train in India. Well, adding to it, there's also a TV, intercom, Wi-Fi, amongst the other modern amenities. Now, the pricing for this starts with 1.7 lakh rupees for a night, making it a total of 12 lakh plus for a 7-night journey in Rajasthan. Now, I know you might think that you can get a lavish international holiday out of this price, but guess what? Some people actually pay for this to enjoy vintage royalty on a train. And this is the deluxe cabin. It's also very spacious and comes with all the modern amenities. And the pricing for this comes up to 8.7 lakh rupees for a 7-night journey. Well, if you thought you'll find 5-star luxury only in a hotel, well, guess what? Each coach has a personal attendant to attend to your beck and call should you need anything at any hour of the day. All you have to do is ring a bell. Well, this is truly an exciting journey to be a part of because everything is taken care of for the price you're paying for. Accommodation, all-day dining, sightseeing, organized shopping, and all a traveler has to do is live a life of a Maharaja. Speaking of which, the train has 2 lavish restaurants, the Maharaja and Maharani. Both come in Rajasthani ambience. The Maharaja has blue, white and glass carvings, while the Maharani comes in gold, white and red decor. Both these restaurants serve lip-smacking continental, Indian, Chinese and Rajasthani cuisine. There's also silverware on the table, giving a taste of luxe authenticity. Minister at the time and the chairman railway board and our managing director, they were there in WTM, that is World Trade Mart in London. So they visited Orient Express. From there they conceived the idea, because at that time we were having the old saloons of erstwhile Maharajas. They were not in use. So we combined all these old saloons and made a train, named it Palace on Wheels. That was the idea conceived from there. The guests on board the Palace on Wheels boast of a large number of foreign travelers who want to immerse themselves in the world-class hospitality of India. There simply cannot be a better way to see this great and glorious nation than on the Palace on Wheels. This dream we had of coming here, and the wonderful thing about this dream is that it's every bit as good as I thought it would be. We've heard a lot about the Palace on Wheels for many years and decades, and everyone had told us that this is one place that we should experience. A lot of foreigners do it, and an opportunity for Indians is rare, but we got the opportunity, we grabbed it, and we are enjoying it fully. This royal wagon is also known to cast its spell
traveling through luxury, royalty, supreme hospitality and top-of-the-line services. And having conversed with so many international travelers on board, I can only say I feel so proud to be an Indian for everything we have to offer, just like this train. I hope you got a detailed virtual experience of this luxurious voyage on board. Until then, this is me, Bianca Saurashtri. I will see you soon with many more Lux experiences. जी जनाब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको कैसी लगी ये ट्रेन, और अगर मौका मिलता है तो अगर मौका मिलता है जाने का, और ट्रेन कैसी लगी? एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत अच्छे से आपका मतलब आपको बहुत अच्छे से क्या बोलेंगे, मेहमान नवाजी और हॉस्पिटैलिटी वेलकम कर रहा है। हाँ, इस्तकबाल कर रहा है आपका, वेलकम बहुत ही यूनिक तरीके से। अच्छा, कल्चर ड्रेस पहने हुए हैं, हार पहनाए जा रहे हैं, मतलब आपको लगेगा कि आप राजा महाराजा ही हो। राजा महाराजा बहुत रिस्पेक्टफुली आपको वेलकम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायर हुई इसको देखकर। और आपने जैसे पूछा कि मौका मिलेगा तो जाओगे, क्यों नहीं जाऊँगी, चलूँगी यार, कोई भी क्यों नहीं जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, इनकी ये हैरान थी, इनको वाकई ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो इन्होंने तसव्वुर भी नहीं की थी। अच्छा, मैं जब वीडियो देखने लगा था आहिस्ता आहिस्ता तो मुझे पता है क्या लगता था कि यार हम तो कुएं के अंदर एक मेंढक नहीं होता जो बाहर कभी ज़िंदगी में नहीं आया होता। तो जब ये वीडियो देखने लगा मैं, तो साल 6 महीने जब हुए तो मुझे ऐसा लगा मैं वो कुएँ का मेंढक थोड़ा बाहर आ गया हूँ, और मुझे कुछ और भी दिखने को मिल रहा है, कुछ और चीज़ें भी दुनिया में अब कभी तसव्वुर भी कोई पाकिस्तानी नहीं कर सकता कि इस तरह की ट्रेनें भी होती हैं जो टूरिस्ट पर्पस के लिए बनाई गई हैं, और उसके अंदर ऐसा लगता है पूरा महल है। उन्होंने नाम भी तो ये रखा है ना, पैलेस ऑन व्हील। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, मतलब एक तो होता है चलो बिस्तर लगा दिए, सोफे लगा दिए, आप ज़िंदगी की सारी सहूलतें वहाँ दे रहे हैं। अब वहाँ पर आपको स्पा भी है, वहाँ पर मतलब यूँ समझ लो कि रेस्टोरेंट भी है, सब कुछ मौजूद है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। कमी है तो सिर्फ पैसे की, आपने पैसे जमा कराए और चले। अच्छा, सिर्फ ट्रेन का सफ़र नहीं हो रहा, ट्रेन एक शहर में रुकती होंगी, एक आध दिन, एक है ना, फिर उसके बाद कोई किसी महल के पास रुकी जो बहुत ही मतलब एक राजाओं महाराजाओं के ज़माने के महल हैं, उसका टूर करवाया। अच्छा, जंगल सफारी भी थी। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या टूर करना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो। पैकेज है 7 डेज़ का, 8 डेज़ का, 12 डेज़ का, 15 डेज़ का, डिपेंड करता है आपके ऊपर। मेरे ख्याल में पैकेज जो है वो है 7 दिनों का, लेकिन उसके अंदर जो रूम दिए गए ना वो थोड़ा सा वेरिएशन है। 12 लाख का भी है, डिलक्स रूम है, एक डिलक्स है और एक दूसरा है, तो वो मेरे ख्याल में 8 लाख का है। लेकिन ट्रेन जहाँ जहाँ जा रही है तो उसको सबको जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा। आधी ट्रेन इधर नहीं जाएगी, आधी ट्रेन उधर नहीं जाएगी। अच्छा, मतलब ये होस्ट थी, इन्होंने भी बड़े ज़बरदस्त कपड़े पहने हुए थे। जब ऐसी जगह जा रही है तो उन्होंने अपनी भी पूरी तैयारी करके, अट्रैक्टिव लगे, लोग देखकर अट्रैक्ट हो। तो ऐसे ही मतलब इंसान जाए कहीं बाहर, अगर आप जा रहे हो, जाहिर सी बात है तो अट्रैक्ट लगो। ये भी अट्रैक्ट हो गए, यहाँ बैठे बैठे वीडियो देख कर ये अट्रैक्ट हो गए। नहीं, अच्छा लग रहा था। हाँ। मैंने ये वीडियो पहले भी देखी है, तो मैंने कहा आपके लिए थोड़ी सी यूनिक होगी, इंटरेस्टिंग होगी, हैरान कौन होगी कि यार ऐसा भी हो रहा है दुनिया में और इंडिया में। अच्छा, हमारे बराबर में ही 7 आज़ादों हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्या से क्या कर रहे हैं। आज हमारे वही पुरानी ट्रेनें ढक 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 ढक, और यहाँ पर ट्रेनों के अंदर बाकायदा आप देखो, ये ट्रेन इस लेवल की होगी, चल रही है तो आप जूस पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, तो उसने गिरना नहीं है, बिल्कुल कंफर्ट है वो। हाँ, मतलब उसमें कोई लपक झकपक कुछ नहीं होगा। और हमारे यहाँ तो मैं एक बता रही थी कि बोला अगर हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो 1 हफ्ते तक तो ऐसा लगता है अभी भी हम हिल रहे हैं। बैठे बैठे होता है नहीं, वो कहता है ऐसा लगता है कि अभी भी वही माहौल चल रहा है, वो माइंड ऐसा अजीब सा हो जाता है। आपने ट्राई किया कभी? बैठे? मैंने बैठा हूँ ट्रेन में, पाकिस्तानी। हाँ, बता तो रहा हूँ, छक 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 छक, और बड़ी बुरी हालत हो जाती है। गर्मी के दिनों में तो आप अगर सफ़र कर लेना तो बुरा हाल हो जाएगा। आप बैठी हैं? नहीं, मैं नहीं बैठी, लेकिन मैंने सुना है कि वो जो एयर कंडीशन वाले भी तो होते हैं। वो भी होते हैं, बिल्कुल हर तरह के होते हैं, लेकिन ये कि मैं जो नॉर्मल में बैठा था तो बड़ी बुरी हालत हो जाती है, बहुत बुरी। नहीं, मैं नहीं बैठी, मैं सिर्फ बस गाड़ी बस इसमें बैठी, ना जहाज है। शौक है? नहीं, मुझे ट्रेन का, नॉर्मल ट्रेन में भी सफ़र करने का तो शौक तो है। ट्रेन का सफ़र में मज़ा है। हाँ, एक यूनिक चीज़ है, यूनिक चीज़ है ट्रेन। और इसके अलावा मेरा तो वैसे प्लेन में बैठने का शौक है, लेकिन पासपोर्ट ही नहीं है। डर नहीं लगता? नहीं ना, एंजॉय। मुझे बड़ा डर लगता है प्लेन में, इतनी ऐसा नहीं गिर ना जाए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है हवा में कैसे चलता है यार ये बस चलेंगे।
ज़िंदगी में कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप पढ़ना, कहते हैं कि आप जो सोचो स्ट्रांगली आपको वो मिलेगा। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।